you will be active more. जी प्राइम क्या होता है फिलर का? ये बड़ी ज़्यादा टर्म यूज़ होती है और इसका बहुत ज़्यादा हम सोचते भी रहते हैं हाई जी प्राइम, लो जी प्राइम, यूज़ हियर देयर, ये क्या चीज़ है? Viscosity. It is the viscosity of the filler, elasticity and viscosity of the product is G prime. जितना ज़्यादा concentrated product होगा और जितनी ज़्यादा वो अपनी फॉर्मेशन और शेप को मेंटेन रखेगा वो हाई G प्राइम होगा. ठीक हो गया? अब जितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो सॉफ्ट होगा और जितना फ्लूइड होगा उसकी जी प्राइम लोअर होगी. अब जो फिलर हमें बोन के ऊपर चाहिए डायरेक्ट, जैसे सर बात कर रहे थे कि हमने एरियाज जहाँ पर हमें डायरेक्टली नीडल टेक्निक यूज करनी है और बोन के ऊपर डालना है, उसमें कौन सा प्राइम होगा फिलर का? हाई जी प्राइम होगा. और जो हमें फ्लूइडिटी ज़्यादा चाहिए जैसे ग्लैवेलर एरिया है या ये जो हमारा टियरट्रफ एरिया है, अंडर आई एरिया है, इसमें हमें कौन सा चाहिए? लो जी प्राइम. तो एक सिर्फ जनरल सा रूल आप याद रखेंगे. इसी रूल को ही आगे डिफरेंट कंपनीज ने डिफरेंट तरह से प्रोडक्ट्स के नेम्स और वो हर चीज़ सीखे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सेम रहेगा सारी चीज़ों के ऊपर. ठीक हो गया जी. अब फॉर मी इट इज़ आई वाज थिंकिंग व्हेन सर वाज डिलीवरिंग द लेक्चर कि एक मेरे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन इनसाइड मी कि व्हाई आई एम परस्यूइंग एस्थेटिक्स. ठीक है ना? तो उसमें देयर आर 2 or 3 things that convinced me internally to move on with this line, because जब तक आप internally किसी काम के लिए dedicated नहीं होते, you cannot do it. And believe me, money is not the thing that can convince you for anything. If you are running after something that you want to get money, you will never reach the excellence. तो excellence के लिए आपके जो motivational factors हैं वो थोड़े से, because as long as we will not be clear from inside us, we will not be able to pursue and run after the things. The patient which became my motivation was a 20 years old girl. It was 14 or 15 years back. I was doing my OPD and the girl came with the atrophic hands. She had loss of subcutaneous tissue and her hands literally looked like 50 years plus. And at that time I was talking against those who were practicing aesthetics. I was like, this is a short-term field, it will soon die its own death, it's not going to last, or I was not convinced at all. And the girl came to me and she said, my marriage proposals are being rejected because of my hands. People look at my face and then they look at my hands and they just leave my home. And she was crying. And what I said to her, don't worry, it's all fine, it's natural, just accept it. But the way she looked at me and the way she said there is no hope, I said there is serums are there, some products are there, but they cannot help you much, so just accept it, pray to God that you get some good proposal, somebody or something like that. She left the clinic, she kept sitting, for looking for some hope, but that was the moment that struck me internally that I have to change my thinking. ठीक हो गया जी. और दूसरा जो है why aesthetic is becoming more like demand of the day is because what we are offering to our patients, quality of life. And in the era where we are living, our society is obsessed with the parents or not. It is obsessed with the parents. That is a separate debate, but living in the society where our field is medical and we are people of aesthetic dermatology or aesthetic plastic surgery, but we cannot change the society's ideology or rules, but we can play our part as practitioners to help with the depression and anxiety going on with the patients, what is going on inside them, so we can offer them a better quality of life, help them get some better appearance. Although counseling is a part of aesthetic procedures, but we need to offer some solution to the patient as well. So these were my driving forces. I just talked about these because I felt strongly that I should talk about these. सही हो गया जी. अब हम स्टार्ट करते हैं. आगे करिएगा प्लीज. अच्छा जी, थोड़ी सी चीज़ें रेपिटेशन है और थोड़ी सी कुछ नई चीज़ें भी हैं. तो I was thanking God
लाल माटी के चले कुछ डिफरेंट है बीच में तो थोड़ा अच्छा जी। डर्मल फिलर्स के बारे में हमने बात कर ली है, और फिलर्स जो है उनकी एक्शन क्या होती है कि ये हमें वॉल्यूमनाइज भी करते हैं जहाँ वॉल्यूम लॉस है, जैसे सर मेंशन कि फैट लॉस है, वॉल्यूम लॉस है, या पेशेंट अगर कॉन्टूरिंग चेंज आ रहे हैं किसी जगह पर, या फिर हमें कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए लॉस ऑफ स्ट्रक्चर होने की वजह से, तो डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। अब इसमें पेशेंट कैसे आते हैं हमारे पास? पेशेंट के जिस पेशेंट का आपने फिलर करना है वो आपके पास क्या कंप्लेन लेके आएगा? गैप है या कोई चीज नीचे आ गई या लाइन पड़ रही है। एक्सेलेंट के साथ की दाग। यस कि मुझे यहाँ पर डार्क सर्कल्स हो रही है, हॉलोनेस फील हो रही है, और क्योंकि यहाँ मुझे डेफिशिएंसी फील हो रही है, मुझे अपने फोल्ड्स फील हो रहे हैं, मुझे सैगिंग फील हो रही है, एजेड लुकिंग हो रही है। एक्सेलेंट सर, समराइज्ड इट अप। सो पेशेंट के जो कंप्लेंट्स हैं वो लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड होंगी, ठीक है। लोकलाइज्ड से मुराद ये कि वो किसी एरिया को टारगेट करके कहेंगे कि मुझे ये लग रहा है, ठीक है। और जनरलाइज्ड क्या होगी कि अ पेशेंट कम्स टू वॉक्स इनटू योर क्लिनिक एंड सेज आई एम ऑल एजेड, लुक एट मी, ठीक है। तो यू शुड नो एज अ प्रैक्टिशनर कि आपने जब लोकलाइज्ड एरिया है तो उसको कैसे आप इफ द पेशेंट इज फोकस्ड, वो आपको कह देते हैं कि हमने इसके अलावा कुछ नहीं करवाना, तो यू शुड नो कि मैंने इस एरिया को कैसे नेचुरली कॉन्टूरिंग दे देनी है। और अगर ओवरऑल जनरलाइज्ड एजिंग की फीलिंग आ रही है तो वही सर वाली बात कि आप रेपिटेशन यू कीप ऑन डूइंग इट्स लाइक प्रैक्टिस। Aesthetics is not like we learn it in a day or so. It is not discouraging for you, rather encouraging, because you people are doing it. You are trying to learn it, and you are practicing it. You are trying to get the fine skills. तो इंशाल्लाह ताला one day you will be the best ones. जैसे सर ने कहा है कि giants, you ride on the shoulders of the giants. So you have to walk first step, second step, third step, and then you reach the next step. So this can be the patient presentation. Patient of filler when walks into your clinic. आगे जी। Biodegradable होते हैं और non-biodegradable होते हैं, और as a beginner what should we prefer? आगे please। Biodegradable. अब इसमें थोड़े से इनके हम नाम याद करना, जैसे कि पोलीलैक्टिक एसिड जो है PLLA, ये किस नाम से है? स्कल्प्ट्रा। तो एज बिगनर्स हम करेंगे नहीं, बट वी शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। और कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपिटाइट, जैसे डॉक्टर अब्बास ने मेंशन्ड, किस नाम से है? रेडियस। और देयर इज द फिलर एलांसे, जिसकी आजकल ज्यादा बात हो रही है, वो क्या है? PCL है, दैट इज PCL। ठीक हो गया। तो आपको जो एक रनिंग क्या कहते हैं, द ट्रेंड ऑफ द फिलर्स, उनका भी पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड कौन कौन से फिलर्स का चल रहा है अभी। आगे प्लीज। ये जी परमानेंट फिलर्स है, व्हिच वी विल नॉट डिस्कस टुडे। आगे जी। अच्छा, ये वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। मल्टीपल इंडिकेशंस है, फेशियल रिजुविनेशन लोकलाइज्ड जब पर हमने करनी होती है, या हैंड्स के ऊपर, या नेक में, या एनीवेयर इन द बॉडी वेयर कॉन्टूरिंग इज नीडेड। आगे जी। It has been done a lot, just that a patient presents to you with the chin recession. तो कल एक पेशेंट थी ना, वो जो नीचे कह रही थी, जिनका हम देख रहे थे यहाँ से, तो चिन का जो है ना, this is the area which is underestimated a lot, but correcting the chin helps with the profiloplasty of the patient a lot. It changes the profile of the patient altogether. Your eyes should be tuned to 1.68 to 1 ratio, golden ratio of the face, which is from this to this is 1.68 and this is 1, right? Your eyes should be tuned to the golden ratio of the face. So, looking at the chin repeatedly and imagining how would the patient look when the chin will be done. What will be the techniques we will discuss in detail. Initially तो हम यही hyaluronic acid filler यूज करेंगे, but Elance is the preferable filler for chin augmentation. और कौन सी टेक्निक ज़्यादा preferable है जी यहाँ पर? Injection, bolus, ठीक है जी। ये we will draw कि आपने central point बनाना है और 2 lateral points होते हैं
ये चिन की प्रोजेक्शन का एक और तरीका, रिलोंगेशन का एक और तरीका, द सटल डिफरेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स वी विल डिस्कस ऑन हैंड्स ऑन। अच्छा जी, ये एजिंग के डिफरेंट, ये चिन फैट कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें यू कैन सी द 3 फैट पैड्स व्हिच आर सुपरफिशियल एंड 2 आर डीप। ये हमने वेसल्स की काफी सारी बात कर ली है, तो ये टोसिस डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकती है। अब एजिंग जो है वो जस्ट टोसिस या सर जो बात कर रहे थे, सर ने टर्म यूज की थी डिस्प्लेसमेंट। जो आपके फैट पैड्स हैं, जैसे यहाँ पर जॉल है, वो या तो डिस्प्लेस हो सकता है, या वो हाइपरट्रॉफी हो सकता है, या वो दोनों ही हो सकता है। तो डिफरेंट तरह की आपकी जो ये जॉ की सारी लाइनें चेंज हो सकती है। ये चिनका जो हमने बात की अभी आगे नेक्स्ट, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जी। वी विल ट्राई टू मेक इट एज मच सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल। इसको विद द हेल्प ऑफ कैन्युला भी कर सकते हैं, देयर इज टेक्निक नंबर 1, और कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, बट टुडे वी विल फोकस ऑन द इंजेक्शन टेक्निक ओनली। अच्छा जी, अब जॉ लाइन जो है उसकी, yesterday's patient was an excellent example. She needed jaw and chin. Her upper and middle face were quite proportionate, but she lost all the proportion in the lower third of the face. So by defining the jaw, you can give a very youthful appearance. There is a huge change with only few mLs of filler over the jawline and in the chin. ये हमारे जाउल फैट पैड्स हैं जो डॉक्टर शाजी has discussed in detail, और ये just बोनी स्ट्रक्चर, आई थिंक इट हैज बीन डन। सो वेसल्स का अगेन बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हो चुका हुआ है। जॉ के ऊपर वी प्रेफर, देयर आर 2 टेक्निक्स, यू कैन डू एनी। One technique is injection technique, where we can have 4 or 5 injection points. One is above the angle of the mandible, another is pre-jowl, another is post-jowl, and over the lateral to the chin. These are injection direct on the bone, but I personally prefer the cannula technique, because we can easily inject along the ramus, along this body of the mandible, and along this ramus of the mandible. So by fanning over these subcutaneous plane, जैसे सर ने बात की कि आपने यहाँ पर subcutaneous plane में रहना है, तो आप बहुत beautifully jaw line and angle definition कर सकते हैं। और आगे एक स्लाइड होगी जिसमें हम जस्ट मेन एंड वुमेन का जो सर भी बहुत स्ट्रेस कर रहे थे, ये इंजेक्शन टेक्निक है जी, जहाँ पर आपने ये 4 और 5 पॉइंट्स के ऊपर इंजेक्ट करना है। ठीक हो गया जी, ये प्री जॉल और पोस्ट जॉल जो हम बात कर चुके हैं। टेम्पोरल एरिया, अगेन ये रेपिटेशन है थोड़ी सी, बट अगेन फॉर द टेम्पोरल एरिया देयर आर 2 टेक्निक्स। एक तो आप इंजेक्शन टेक्निक यूज करते हैं जिसमें जो ऑर्बिटल रिम है इससे 1 सेंटीमीटर अबव एंड 1 सेंटीमीटर लेटरल टू द क्रेस्ट आप एक मार्क बना लेते हैं इस एरिया को, जो कि वो डॉक्टर शाजी वाज टेलिंग ए वेस्कुलर जोन, बिल्कुल डायरेक्ट ऑन द बोन। आप इस तरह भी जा सकते हैं, और जो सर ने बताई है दैट इज अनदर टेक्निक है, आप यहाँ से नीडल को स्लाइड करें और इस तरफ चले जाएं। दूसरी जो है इसके लिए कैनुलर टेक्निक यूज होती है, जिसमें आप लैटरल कैंथस ऑफ द आई से बिल्कुल 2 और 3 फिंगर ब्रेथ इधर चले जाते हैं लैटरली, हेयर लाइन के साथ आप अपना एंट्री पॉइंट बना के इधर सबक्यूटेनियस प्लेन में फैनिंग कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो गुड टेक्निक। और टेम्पोरल एजिंग जो है 2 तरह की हो सकती है, एक तो सिर्फ सुपरफिशियल ये जो फैट है इसकी ट्रॉफी हो जाए, या फिर सारे बोनी मसल हर चीज़ की। अगर एजिंग टाइप जो है सवेयर होगी तो फिर आप दोनों बोलस प्लस कैनुला करेंगे, और अगर सुपरफिशियल सी होगी तो फिर आप कैनुला विल बी गुड। आगे